Hello students, myself Mushir Ahmed. Now today I'm going to teach you another lesson in history, and the name of the lesson is The Making of a Global World. The Making of a Global World. Mainly this chapter based on globalization. So first of all, we discuss about the definition of globalization. Globalization, the movement of people, goods and services across the nations is known as globalization. It means the movement of people, goods and services from one nation to another nation is known as globalization. It means the movement of people, goods and services across the nations known as globalizations. This process is called globalization. But you know that it's not a new phenomenon. It means globalization is not a new phenomenon. Why it's not a new phenomenon? Because of that, you know that Christopher Columbus, a native of Italy, discovered America in 15th century. You know about the Christopher Columbus, who discovered America in 15th century, and the native of Italy. And Portugal resident named Vasco da Gama discovered India. You know that Vasco da Gama, 1498, he discovered India. Unfortunate. So it's a globalization is not a new phenomena. It means the movement of people, goods and services from one nation to another nation is still continue, like Christopher Columbus discovered America and Vasco da Gama discovered India. Now before the Christian era, the trade through Silk Road. Before the Christian era, trade through Silk Route. Silk Route is an ancient trade route. We discuss in further video separately. But in this video, we discuss about the globalization, content of globalizations. So before the Christian era, trade through Silk Road. It means through Silk Road, the movement of people, goods and services from one nation to another nation. It means that is the globalization process. It's not a new phenomena. Now the globalization and industrialization. Globalization and industrialization has brought to big change to human society. It's true. Globalization definition, you know that the movement of people, goods and services across the nation, that is known as globalization. Industrialization, grassroots change in production system. Grassroots change in production system, it means large scale production done through machines. That process is called industrializations. And you know that industrial revolution done in Britain. So the combination of globalization and industrializations brought a big change to human life. Now the China till today, if we talk about today, China famous for mass production, and India provide customer support to China. You know that China and India larger populated country, but China
famous for mass productions. It means production activity at a mass level done in China, and their production and India provide customer support for their production. It means India provide customer support of Chinese product. Why? Because of that, China famous for their mass production. So China is famous for mass production and India provide customer support. So now that is the introductory lecture of this chapter, the making of a global world. In this video we discuss about the process of globalization, the definition of globalizations. You know that the definition of globalization, it means the movement of people, goods and services from one nation to another nation is known as globalization. But it's not a new phenomena. Why? Because of that, Christopher Columbus, a native of Italy, discovered America, and Christopher and Vasco da Gama, Portuguese sailor, discovered India in 1498. But before Christian era, trading activities through Silk Route, it's an ancient trade route. Now the globalization and industrialization has brought a big change of human society. You know that. Different nations come together through globalizations. So that is the topic, globalization, in the chapter, the making of a global world. आज हम लोग हिस्ट्री का एक नया चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड पर डिस्कशन शुरू कर रहे हैं. क्योंकि ये चैप्टर पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन पर बेस्ड है, तो आज हम इसकी डेफिनेशन को पहले स्टडी करेंगे. द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशंस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. लोगों का, सामान का और सर्विसेज का एक जगह से दूसरे जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह मूव करना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है. इसका मतलब कि ग्लोबलाइजेशन एक नया फिनोमेना नहीं है, एक नई चीज नहीं है, ये पहले से होता रहा है. कैसे? क्रिस्टोफर कोलंबस, आप जान रहे हैं कि इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 15वीं सेंचुरी में अमेरिका को डिस्कवर किया. यानी क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका को डिस्कवर करने के बाद और सारी जगहों से लोग वहां आने लगे, ट्रेडिंग एक्टिविटीज शुरू हो गई. पोर्तुगीज रेजिडेंट वास्को डी गामा, जिसने 1498 में इंडिया को डिस्कवर्ड किया था, वह कालीकट पहुंचा और वहां का रूलर जमोरियन था जिसने उसका वेलकम किया. और वो भी अनफॉर्चुनेट इंडिया को डिस्कवर किया. यानी दुनिया को ये बताया कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर काली मिर्च का काली मिर्च लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है काली मिर्च का, जो वो उसे लेकर गया और उसे उसका 60 गुना मुनाफा उसने अर्न किया ब्लैक पीपर के ट्रेड से. इस चैप्टर में हमने ग्लोबलाइजेशन को इसलिए वो किया है कि ग्लोबलाइजेशन एक नई चीज नहीं है, ये पहले से होता रहा है. ट्रेडिंग एक्टिविटीज पहले से ही होती रही. हम ये जान रहे हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन जब थे इंडिया में, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है ज्यादातर, तो उस टाइम इस सब कॉन्टिनेंट में एक डकयार्ड था लोथल, जिससे ट्रेडिंग एक्टिविटीज मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से होती थी. मेसोपोटामिया मतलब दोज आर सिचुएटेड इन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर, जो कि दजला और फरात नदियों पर बसा हुआ बगदाद शहर, जो कि आज की डेट में इराक है, उससे ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती थी. तो ये एक नया फिनोमेना नहीं है, पहले से है. क्रिश्चियन एरा के टाइम, बिफोर क्रिश्चियन एरा, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी वो ज्यादातर सिल्क रूट, जिसे आप रेशम मार्ग कहते हैं, होती थी. इस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का हम डेफिनेशन जान चुके हैं. द मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रासरूट चेंज इन प्रोडक्शन सिस्टम is called
Industrialization through machine, it means making goods through machine. मशीनों के द्वारा लार्ज स्केल पर सामान को बनाया जाना इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है, जो कि ब्रिटेन में शुरू हुआ था, जिसने पूरी तरीके से ह्यूमन लाइफ को चेंज कर दिया। आज की डेट में चाइना दुनिया में मास प्रोडक्शन यानी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, और इंडिया उसके लार्ज प्रोडक्शन को कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, यानी ग्राहक एक तरीके से इंडिया प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हम उस लेवल पर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल पर चाइना प्रोडक्शन कर रहा है। एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड के मार्केट में चाइना के सामान मिल जाएंगे आपको, इसीलिए क्योंकि चाइना जो है मास लेवल पर प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है। सो नाउ दैट इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस शुरू किया है। क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन है और ग्लोबलाइजेशन आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफर होगा इकोनॉमिक्स के पैटर्न पर और हिस्ट्री के पैटर्न पर। सो नाउ दैट इज द टॉपिक ग्लोबलाइजेशन।